Good morning, students. My name is Dr. Shefali Daya. I am working at GSSS Katarpuri, Gurugram as chemistry teacher. So today, students, we do class 12, lesson 6, general principles and processes of isolation of elements, part 2. Our subject moderator is Dr. Jyoti Arora. General principles and processes of isolation of elements. We'll take purification of metal in the part 2. Till now, we have done crushing and grinding of the ore. In the last video, we have also taken concentration of ore and the isolation of metal from its concentrated ore. The concentrated ore is here converted into crude metal, means to say we have reduced the uh, metal oxide or carbonate or sulfides to crude metal, which is a metal but it is not to its purest form. So, to purify it, now we are going to do the purification of the metal in this video, right? Purification of metal. प्यूरिफाई करना किसी चीज को मीन टू से जो क्रूड मेटल हमें अभी तक मिला है आफ्टर द थ्री प्रोसेसेस वी हैव डन is a metal and that metal is not a pure at its state. It is about 97% or 98% of the purity. Now, if we want to have a pure metal that is up to 99.99% purity, we'll do what? We'll refine it, and this is purification of metal. So, the process of purifying the crude metal is called refining, and this includes various methods like distillation process, liquation process, electrolytic refining, zone refining, vapor phase refining, which has two processes, Mond process and the Van Arkel method. The last but not the least is the chromatographic method, right? So students, now we are going to take all of them one by one. Here, the process of purifying the crude metal is called refining. This depends upon the nature of metal and the nature of impurities. Now, listen to me, students, carefully that yes, we are going to purify the crude metal, but हमें ये देखना है कि हमारे जो क्रूड मेटल है और जो इम्प्योरिटीज रह गई हैं, कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं, उनका नेचर क्या है? Because we know all metals do not follow similar defining techniques, right? इसीलिए हम इतनी सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, right? The very first we are going to do is the distillation process, and this process we have already done in our ninth class. Distillation जो है वो हमारा boiling point के ऊपर डिपेंड करता था. Remember, we used to separate alcohol and the water mixture. Fine. Similarly, now look here. What happens in distillation process? The pure metal is distilled over. मतलब मीन टू से जो हमारी प्योरिटीज हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है एंड वी कैन इजीली डिस्टिल ओवर आर प्योर मेटल फ्रॉम दोज impurities. Volatile metals like zinc, mercury, cadmium, etc. can be purified following this method. Why? Because in ये metals जो है ये क्या है? Volatile metals की तरीके से act करेंगे and they boil their boiling point will be reached much earlier than the impurities that they have. Okay. The next is the impure metal is heated in an iron retort followed by condensation of vapors in separate receivers. And this we know जैसे हम similarly distillation में करते थे अल्कोहल हमारा 77 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता था फिर उसके बाद कंडेंसर लगा के हम उसको कूल करके रिमूव करते थे. Similarly we do here what we do, we take out the metal from the by the volatile matter and then we condense it
and then we separate it in the receivers, right? Okay, this is not such a difficult thing, that is distillation process, right? All of we us are aware of it. Then comes the liquation. Liquation, as the name suggests, liquefy होगा. Liquefy क्या होगा? Let's see. Employed for the metals with lower melting point, right? Make it a point. जो हमारा distillation process था वहां पर हम higher boiling point की बात कर रहे थे, यहाँ हम lower melting point की बात कर रहे हैं. Why? Because we are heating, we are liquefying what? The crude metal. जब हम crude metal को liquefy करेंगे तो जो crude metal है वो melt हो जाएगा easily, fast, and leaving behind the impurities, and that metal can be separated out. This process is done in the laboratory furnaces, where what we do, where the crude metal is heated over the hearth. Look here, the hearth is visible. This is the hearth. जब हम इसको हीट ओवर करेंगे तो क्या होता है हर्ट के ऊपर, यहाँ पर मेल्ट कर जाएगा और वो आगे रिमूव कर जाएगा. फाइन. इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो हमारी है, ये हम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं टुवर्ड्स द राइट, जो हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं उनके लिए करते हैं. एंड इसके अंदर प्योरिटी का चांसेस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा रेट है. वाई? बिकॉज लुक टू द प्रोसेस, आपको खुद ही समझ आएगा, राइट? तो हम इससे कौन कौन से मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं? कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, lead, chromium, aluminium. Look, all of them are metals from D block, right? Here, what we do, like a electrolytic cell, we have two electrodes. One is the positive and the other is the negative. The positive, the anode will have impure metal block, and the cathode will be with having pure metal strip, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर लेते हैं तो कॉपर का जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है, जो इससे पहले हम रिड्यूस्ड फॉर्म में से निकाल के लाए, हमारा जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है उसको हम एज अ ब्लॉक बनाएंगे और एनोड पर एनोड मतलब इलेक्ट्रोड लेंगे. जो हम कॉपर प्योर लेंगे उसको हम एक सिंपल वायर ले लें, एक शीट ले लें कॉपर की, वो लेंगे एक सिंपल स्ट्रिप और हम उसको एज कैथोड यूज करेंगे. नाउ वी नो कि इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, राइट? तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा किस चीज से बना होगा? जो हमारा कॉपर का सॉल्यूशन होगा, राइट? अब हमारे पास दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोड भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है, राइट? अब हमें वो सर्किट कंप्लीट करना है. यू पीपल नो वेल कि कंप्लीशन ऑफ द सर्किट जब होगा तभी करंट फ्लो करेगा, राइट? तो हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे विद अ सिंगल बैटरी. नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही सर्किट ऑन कंडीशन में आएगा, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, नाउ व्हाट विल हैपन? At anode, that is the positive electrode. This is the anode and this is the positive electrode. What happens? The metal, that is the crude metal, which having some impurities, will give the electrons. Where it will give the electrons? It will give the electrons in the circuit, and the electrons will start, the electron will be lost, and the metal that is formed due to the metal cation that is formed due to the loss of the electron will be added into the solution form of the electrolytic solution, right? This soluble electrolytic solution, salt of metal, will have the copper from the blistered anode electrode. Mean to say, जो मेरा इलेक्ट्रोड है एनोड का, कहाँ है? राइट हैंड साइड पे. ये क्या करेगा? यहाँ से कॉपर का आयन जो है, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, will come into the electrolytic solution. नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पर कैथोड है. कैथोड की हमने एक सिंपल स्ट्रिप ली है ऑफ प्योर मेटल.
नाउ व्हाट हैपन्स, जो हमारा प्योर मेटल है वो क्या करेगा, वहां पर हमें हमारे कॉपर आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट में है उनको इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये जो कॉपर है ये मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लुक, Cu2 plus will get two electrons and it will be in the form of Cu metal, right? तो जो केटायन है फ्रॉम द सॉल्यूशन किधर जाएगा, ओवर द कैथोड, और कैथोड के ऊपर बेटा वो अपनी फिल्म बना लेगा, and this film is about 99.99% pure to the mix, right? Now this is the way जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं टू गेट प्योर कॉपर। अब जो इम्प्यूरिटीज है उनका क्या हुआ, उनने तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, वो सोल्यूशन में नहीं आए। नाउ व्हाट विल हैपन, वो कभी सर्किट में नहीं आए वो, राइट ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, दे विल जस्ट सिंपली सेटल डाउन below the anode, and they are known as anode mud or anode sludge, right? They are simply the impurities which are left behind while the ions from the anode moves into the electrolyte, and from electrolyte they get electron and deposited over the cathode. Fine, got it? Yes. Now moving to the next process, zone refining. It is also known as fractional crystallization. Fraction mean to say, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इम्प्यूरिटीज और मेटल्स हैं उनका एक फ्रैक्शन है, मेटल है उसके अंदर हमारी इम्प्यूरिटीज हैं, बट हम उसको क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे अपने मेटल को, और उसको इम्प्यूरिटीज को मॉल्टन स्टेट में रखेंगे और अलग करेंगे। अब ये तो मैंने बोल दिया। नाउ मूविंग टू द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड ऑफन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स, राइट? हम यहाँ ये देखेंगे, सबसे पहली बात जो सबसे कॉमनली हमसे पूछी जाती है वो क्या है कि जोन रिफाइनिंग जो है वो कौन कौन से मेटल्स के लिए होती है, इट इज फॉर सेमीकंडक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, राइट? सेमीकंडक्टर्स को हम बहुत जगह यूज करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हाई प्योरिटी डिमांड करती हैं, and for that we use zone refining. अब zone refining जो है हमारा प्रोसेस, उस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखें, the method is based upon the principle that the impurities are more soluble. हमारी impurities क्या है, more soluble हैं, ठीक है, किसमें, in the molten state। जब क्रूड हमारा मेटल मॉल्टन स्टेट में है, then the impurities are very much soluble, right? And then in the solid state, तो हमारा जो मेटल है वो लिक्विफाइड नहीं होगा, हमारा मेटल सिर्फ अपनी मोल्टन स्टेट में आएगा, और हम उससे क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। फाइन, कैसे करेंगे, इट इज, अच्छा एक चीज जो हमें बहुत नोट करनी है वो इस मेथड की ये है, प्लीज पॉइंट इट, मेक इट अ पॉइंट दैट इट इज कैरिड आउट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेट में आएगा इट विल बी वेरी हाईली रिएक्टिव, ये ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, राइट? नाउ लुक, दिस इज अ मेटल रॉड, राइट? मेटल रॉड के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो आपको बार दिख रहा है, इट इज एक्चुअली अ सर्कल, राइट? सर्कुलर हीटर। जो हमारा सर्कुलर हीटर है उसके अंदर मेटल की जो रॉड है वो उसके अंदर से गुजरेगी, ठीक है? क्या होगा, जो क्रूड मेटल है उसकी बेटा हमारे पास क्या होगी, एक रॉड होगी। रॉड जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पास एक पेन है एंड इट इज अ क्रूड मेटल जो है उसके बाहर हम एक हीटर लगाएंगे, एक सर्कुलर हीटर,
जो कि हीट करेगा और हम मेटल की जो रॉड है उसके अंदर से मूव करेंगे। जब हमारी मेटल की रॉड सर्कुलर रिंग में से मूव करेगी, व्हाट विल हैपन, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो हमारी इम्प्योरिटीज थी क्रूड मेटल में वो मेल्ट होती जाएंगी और आगे आगे जैसे जैसे मेल्ट होंगी आगे आगे मूव करती जाएंगी हीटर के आगे। एज द हीट ऑन दे विल मूव नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, राइट। और एंड जो पार्ट होगा उसके अंदर फिर हम उसको कट करके इजीली निकाल देंगे। जो ये प्रोसेस है टू गेट द हाई प्योरिटी, वी फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग कंटिन्यूअसली ओवर द रॉड, राइट। 2-3 टाइम्स तो इट इज ऑब्वियस कि हम करेंगे तो हमारी सारी इम्प्यूरिटीज वहां से रिमूव हो जाएंगी, राइट। सो नोट द प्रोसेस हेयर। The very first is impure metal is converted into a bar, right? बाद में करेंगे जो हमारे हीटर के in between उस साइज की हो कि वो निकल जाए। Heated from one end with moving circular heater. This circular heater is this black colored. This melts to form a molten zone, जो कि क्या बना रहा है, एक molten zone बना रहा है, जहां जहां हीटर होगा वहां molten zone होगा, right? Heater is moved along the length of the rod, उसको along the length of the rod move करेंगे। Pure metal crystallizes out, जो हमारा pure metal है that will be easily removed and the impurities pass into the adjacent melt, and this is the uh, हमारी जो इम्प्योरिटीज है, जैसे जैसे हीटर चलेगा हीटर की डायरेक्शन देखें, जैसे जैसे चलेगा हम अपने उसको रिमूव करते जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट is the vapor phase refining. Vapor mean to say vapor phase में आएगा तो हीट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन होगी, राइट। मतलब कि कुछ तो वॉलेटाइल भी होगा, वॉलेटाइल मेटल जो होगा वो हमारा वेपर फेज में आता है, फाइन। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है वो क्या है, इट इंक्लूड्स कि जो क्रूड मेटल है हम उसको रिएजेंट, कोई केमिकल रिएजेंट लेंगे एट लोअर टेम्परेचर, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, राइट। सिंपल मेथड है। हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब वो जो हमारा कंपाउंड है, जो वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर टू गेट द प्योर मेटल। अब इम्प्योरिटीज आ गई। जो इम्प्योरिटीज हैं जब हम उसको कंपाउंड बनाएंगे एट द फर्स्ट स्टेप, वो यहाँ पर आएंगी नहीं, दे विल बी हेयर ओनली, राइट। जो इम्प्यूरिटीज हैं वो यहीं पर रह जाएंगी, फिर हम वॉलेटाइल को बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसको डिकम्पोज करके अपना मेटल ले लेंगे। इम्प्यूरिटीज हमने पीछे छोड़ दी थी लास्ट स्टेप में, राइट। सो नाउ I want to make a few points about the vapor phase refining. The very first is the metal should form a volatile compound. जो metal है वो volatile compound बनाने वाला हो, why? तब जब वो volatile compound बनाएगा तभी तो जो पीछे छूटेंगी वो impurities रहेंगी, right? उसके बाद क्या है, the volatile compound should be easily decomposable. Why? क्योंकि जो complex बन गया, राइट, अगर वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा तो मेटल तो वहां फंस जाएगा, फिर हम केमिकली यूज करेंगे, फिर वो एक्सट्रैक्शन तो नहीं रहेगी, वो हमारा इजी वे नहीं रहेगा, और से हम निकाल नहीं पा रहे, राइट। सो दैट शुड बी इजीली decomposable फॉर द easier recovery from the compound, fine। This method is followed by two processes, and these two processes are very important in this chapter, right? Which are these? These are Mond process and the Van Arkel method. Okay, now we'll take them one by one. Mond process and Van Arkel method. The very first Mond process, it is for the refining of nickel. Impure nickel is heated in a current of carbon monoxide at 330 to 350 Kelvin. Temperature is low, it is not such a much higher temperature. Here, what happens? Nickel tetrachloride is formed, right? Nickel tetrachloride is a complex which is formed here, leaving behind the impurities. Note it down, impurities हमारी first step में remove हो गई. Now what will happen?
Now this complex which is formed is then heated at a higher temperature for thermal decomposition to get pure nickel. Now note this reaction, Betaji. The very first reaction which I'm showing, nickel plus carbon monoxide gives nickel tetracarbonyl compound, and this carbonyl compound then at higher temperature, that is higher than the first, is then decomposed to get pure nickel, right? Make it a point. This is a reaction. You have to write it. Okay. Now next, Van Arkel method. In the Van Arkel method, we purify elements, metals like zirconia and titanium. Now zirconium and titanium को हमारे स्पेसिफिकली ऐसे क्यों चाहिए? क्योंकि हम इसको स्पेस के जो इक्विपमेंट्स है उनके अंदर यूज करते हैं, राइट? So there should be very pure. वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर मेटल्स, राइट? मैंने अभी यही कहा ना, उनको कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशन के बेस के ऊपर डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ प्योरिटी, हाउ मच प्योरिटी वी आर in the requirement, right? Then crude here, what happens? The crude zirconium is heated at lower temperature and then over higher temperature to give pure zirconium, right? Note down the equation, please. The equation is zirconium impure when heated with iodine at 870 Kelvin, it gives zirconium tetraiodide, and this tetraiodide formed is the zirconium iodide form only. Here the impurities are left behind. Now this zirconium iodide which is formed is then heated at higher temperature like 2075 Kelvin to decompose down into zirconium and iodine. This zirconium is pure zirconium that we get here. In fact, we should say this is at its ultra pure form, right? Now, please note it down. Both of the methods are very important. Now we have titanium also here. Titanium also follows the similar process. The difference is only this, the between the temperatures, right? The very first temperature is around 500 or something, and the second higher decomposition temperature is 1700 Kelvin, right? So this is the similar process is followed for zirconium and titanium for the pure metal, right? The next is the chromatographic method. Chromatography अब तक जो हमने की है up to the classes जो बायोलॉजी में भी करते हैं, हमने किया है प्रैक्टिकल में, क्या करते हैं हम उसके अंदर? वी टेक पेपर, chromatographic paper, बड़ा स्पेशल सा थिक सा पेपर आता है, ऑल ऑफ यू हैव सीन इट, दैट इज अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, राइट? हम उसको क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसको मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं और पेपर पर स्पिनच के ग्रीन क्लोरोफिल उसको एक्सट्रैक्ट अलग करते हैं, राइट? दिस वी डू। उसके अंदर हमें अभी तक क्या पढ़ा है कि एड्सॉर्प्शन होती है, हमने लास्ट वाले लेसन में भी किया, एड्सॉर्प्शन होगी क्रोमेटोग्राफी में, उस पेपर के ऊपर जो पिगमेंट है वो मूव करती जाएगी। अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि हम इस मेथड को कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं फॉर दिस चैप्टर, राइट? हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर मेथड के अंदर दो फेजेस लेते हैं, द वन इज द स्टेशनरी फेज एंड द अदर इज द मोबाइल फेज, राइट? अब यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज है वो कौन सा फेज है? जो कि हमारा एक फेज है जिसके अंदर से हमारा मोबाइल फेज मूव करेगा, राइट? मोबाइल फेज जो है उसकी जितनी पोलैरिटी, मतलब जितनी उसकी बॉन्डिंग, जितना उसका एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा स्टेशनरी फेज के ऊपर, वो बाइंड कर जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा। जितना कम होगा इट विल मूव हायर, राइट? ये हम करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, राइट? So it is based upon the principle that different components of a mixture are adsorbed to different extents on the adsorbent. Now, ये जो मैंने आपको बोला stationary phase here is what it is, a simple adsorbent, right? And the mobile phase is the adsorbate. Fine, two phases हो गए. Now there are
several kind of chromatographic techniques. अभी मैंने आपको पेपर बताई, एक गैस क्रोमेटोग्राफी भी है। जैसा हमारा फेज होगा उसके बेस के ऊपर वी विल चूज द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, राइट। हमारे पास एक फिगर है, यू मे लुक एट इट। व्हाट इज द फिगर सेज, जो हमारा ग्रे पार्ट है, ग्रे बॉल्स, look here, these. This is the stationary phase, and this blue and red part, this is all the mobile phase. Now what will happen कि जो मोबाइल फेज है उसके अंदर जो हमारे ब्लू वाले बॉल्स हैं वो ज्यादा नीचे आ गए, रेड वाले बाउंस कर गए, फाइन। तो दीज टू एडजॉर्बेट्स जो है इनकी डिफरेंट काइंड की क्या है, हमारी मोबिलिटी है। वाई, बिकॉज सिमिलर, वही हमने अभी बताया, एड्सॉर्प्शन उनकी जैसे डिफर करेगी। तो जो ब्लू वाला कंपाउंड है वो अलग हो गया और रेड वाला अलग हो गया। ये जो हमारा मोबाइल फेज है ये हमारे स्टेशनरी फेज के थ्रू पास कर गया, एंड दिस कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट फ्रॉम द impurities. फॉर एग्जाम्पल, रेड वर द impurities and blue is the material that we want to extract, right? So this is the chromatographic technique. Now we have used it in the column, we are doing it in the column. So this is known as a column chromatography technique, and this is very common and widely used technique. Here we use stationary phase aluminium or silica gel, and the part, the mixture we want to differentiate, to separate, is the mobile phase. Right? Now the assignment, students, please note it down. The very first is name and explain the methods employed for refining of nickel and zirconia. Yes, Mond process and Van Arkel process. Then is what? Which metals are generally extracted by electrolytic processes? कौन सा होता है? कॉपर हमने किया, सिल्वर भी किया, गोल्ड भी है, राइट? ओके। विच पोजीशन दीज मेटल जनरली ऑक्यूपाई इन पीरियोडिक टेबल? हमने देखा जो हमारा कौन सा वाला ग्रुप है, डी ब्लॉक के अंदर है, फाइन। तो डी ब्लॉक के जो राइट हैंड साइड है बल्कि वही वाले है, ठीक है, आपको बताना है इसको आंसर को। एक्सप्लेन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. Column chromatography, that's the chromatography that we do in the column. Write the principle involved in the process of zone refining. We have to write the principle of the zone refining technique, right? Hopefully, you all have understood the chapters and the topics. So, kindly see the video, very interesting video you will find it, and hopefully you all of you have got the idea of the refining techniques well here. Okay, in the next video we will do some metallurgy techniques of few metals, right?